As you can see, the flag is pretty huge. We have been trying rigorously for the past weeks to lift these kind of slung payload, which is going to generate a lot of drag. Hi, my name is Ishika. I am the Senior Engineer UV Pilot and System here. I am Shafaqat Ali. I am working as a Operation Head. This is Rishi working as a Senior Engineer. I'm Madan Raj, Lead Product Designer. हमारे मैनेजमेंट का एक विजन था कि हम एक इंडियन फ्लैग को होस्ट करें इस 26 जनवरी को. With the dimension of 50 × 33 feet. One of the largest Indian flags ever lifted by any drone, and we have fine-tuned the subble in such a way that it's going to lift our flag with pride. The biggest challenge that we faced during this project is to synchronize the movement of both the crafts at the same time, to see my system and the flag and the other person's system. It's basically a slung payload, and it's going to have its own problems. It's going to have a lot of drag. हमने काफी सारे मॉक्स किए and our team is very confident कि इस 26 जनवरी हम एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे. And we are looking forward for this grand event, and hopefully everything will go as planned. आपके ड्रोन फ्लैग, रोप एंड सबल की सबके दूर होना चाहिए. सेंटर से एक ऐसा शॉट आएगा, फ्लैग नीचे, सबल बीच में, और उस कैप्चर करता हुआ सबल और फ्लैग के बीच में 50 मीटर है. उस तरफ 5-6 लोग, इस तरफ 5-6 लोग, ताकि फ्लैग को ऐसा जब लेंथ में होगी, लेंथ को पकड़ के बस रखना है नीचे. एवरीवन इज क्लियर? क्या करना है अपने आप को? गणपति बप्पा 3, 2, 1 गो. टीम टेकअप के लिए रेडी. टेक पोजीशन. पहले फ्लैग देखेंगे, यहाँ से कोई रफ्ती फंस नहीं रही है, और जब स्लिप हो जाएगा तो हम पीछे जाएंगे. गॉट इट. 3, 2, 1 टेक ऑफ.